जय हिंद दोस्तों। 26 जुलाई का दिन हमारे फौजी भाइयों और हम सब भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। आज के ही दिन कारगिल युद्ध का अंत हुआ था और तब से अब तक 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस युद्ध में न सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी हमारे खिलाफ थी बल्कि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ था। इसका खुलासा हम इंडियंस नहीं बल्कि पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट अली के चिश्ती जी ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पे किया। तो क्या कहा चिश्ती साहब ने, आइए सुनते हैं। अच्छा, इसरो इस वक्त क्या कर रही है, जो कि मैं इस वक्त का कंपैरिजन देखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम कितना पीछे हैं एज अ सुपार को। First, you need to understand the space program India started. Just to give you a perspective, why a country needs a space program, it is very important. It's not that कि आप लोग दिखा रहे हैं कि चांद पे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडिया पे तनकीद भी करते हैं। India is a lower income group country and launching space rockets. India has a perspective, or India knows why it's sending it. Space and rocketry helps you understand not just space, but it's now a matter of national security. India, I'll take you back to the Kargil war. हुआ ये कि आपने GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, जो फ़ोन पे यूज़ करते हैं। द इंडियंस जब हमारे लोग ऑक्यूपाई कर रहे थे टाइगर हिल्स, सो कॉल्ड हमारे जो लोग थे, इंडियंस बॉट इन बोफोर्स विच वर टू एक्चुअली शूट ऑन द हिल टॉप्स। दे नीड कोई भी आर्टिलरी गन जो होती है उसे पोजीशन चाहिए होती है जिस पे आप सेट करते हैं GPS के थ्रू। और तो इंडियंस वर गिवन अमेरिकन सेट्स टू विच एक्चुअली गिव्स यू अ GPS लोकेशन ऑफ एनिमी एंड योर सेल्फ ऑब्वियसली। और फिर उसके लिए आर्टिलरी के लिए यूज़ होती है डिफरेंट पोजिशन। फॉर 3 days the GPS for the Indian army was not working, or it was not working, it was giving wrong signals. Apparently GPS is owned by an American company. The Americans came in and they wanted to delay a war. It somehow helped our Pakistanis because Americans बहुत pressure डाल रहे थे पाकिस्तानियों को पीछे वापस retreat देने के लिए। Indians were bombarding them and killing them. So the Indian GPS got jammed for 3 days. India realized after Kargil war that they need their own GPS system. China did it, and I think China launched it in 2012 for the civilian, and Chinese military is using it since 2014 their own GPS system, Beyond or something like that. So Indians are on plan. तो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी के लिए GPS सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो India is on the verge of creating its own GPS अभी system. तक बनाया नहीं है लेकिन उन्होंने। I think it's work in progress. Probably they've made it and they've not launched it, but they're still checking it. But they have the hardware and the space to do it. Secondly, obviously, the Americans during Trump administration, they formed the Space Force, which is the Space Army. So the Chinese have this capability and the Americans has to hit satellite in the space. अगर आपकी और जो सैटेलाइट जो होती हैं वो कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ आप कर रहे होते हैं इंडिजिनस अपनी। सेकेंडली आप वेदर प्रेडिक्शंस उससे कर रहे होते हैं। आप बहुत सारे दूसरे नेशनल सिक्योरिटी के काम जो कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, जो अपना यूज़ कर रहे होते हैं। इंडिया इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल पावर. इंडिया इज़ एन emerging, one of the second biggest economies in the world now, is emerging to be the second biggest economy after China, and it will be eventually in some years, bypassing everyone with its growth. So India thinks as an independent, superpower, something, it's a growing power, that it needs its own communication, its own satellites. So this is work in progress for them. ISRO. तो दोस्तों, आपने सुन ही लिया होगा कि किस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देते हुए इंडिया के साथ धोखा दिया। और रही बात इंडियन GPS सर्विस की, तो इंडिया ने अपना GPS सर्विस लॉन्च कर दिया है नाविक के रूप में, पर अभी यह पब्लिक के लिए पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। इसमें कुछ लिमिटेशन है। इसका उपयोग अभी वेदर रिपोर्ट और बॉर्डर की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कुछ ही महीनों में यह आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। तो आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों?
जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।